बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से और खूबसूरत नाम से हम आज के 28th वेबिनार का आगाज़ करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर सलमा कुंडी और उसके काबीना के साथ हम अभी अल्लाह ताला के शुक्र से इस काबिल हैं कि हम इसको कंटिन्यू किए। जो अगला वेबिनार है वो WHO के जो नुमाइंदा है पाकिस्तान का, डॉक्टर खलीफा माहीपाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगला वेबिनार होगा हमारा उसके साथ होगा इंशाल्लाह। मैडम, मैं इट इज ओवर टू यू। जी, thank you very much, Professor Mulazim. Bismillahirrahmanirrahim. I'm grateful to PMA for giving us this opportunity कि हमने सीरीज ऑफ लेक्चर शुरू की और आज उसका इख्तितामी लेक्चर है। ओके, एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस जो प्रोग्राम होता है वो वी नो इट्स इम्पोर्टेंट एंड इट्स थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन ऑफ आवर क्वालिटी ऑफ एनी लेबोरेटरी। बहुत एसेंशियल है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एंड दिस कॉन्सेप्ट हैज प्रूवन ओवर टाइम कि इट helps a lot in improving quality and especially the quality which is visible to all. अगर आपको याद होगा तो previously when we were talking of internal quality assurance program and internal quality control, so we talked about few measurements and statistics, और उन statistics में one of them was to calculate the bias of the lab as well as the Six Sigma. And once we were attempting to calculate this bias, we refer to a peer stats. और what is this peer stats? और ये data कहाँ से आया? This came from external quality assurance program या ECAS जिसको बोलते हैं, यानी उसके और भी बहुत सारे नाम हैं, proficiency testing. So that data came from that. So it means that in order to calculate your bias, you need to be participating in certain external quality assurance scheme. So that becomes a mandatory sort of affair if you are going to calculate these stats. Similarly, हमने जब sigma metrics of the test calculate की तो obviously we needed to calculate the bias, और ये bias जो है उसकी both imprecision और inaccuracy के लिए bias is inaccuracy, तो उसको calculate करने के लिए we again, as I said, we refer to that peer data which came from external quality assurance program. So that in order to calculate these two things, you need to be participating in one of the programs. So external quality assurance quality program, जो external quality control जिसको हम कहते हैं, इनके और भी tests के नाम है, like proficiency testing program or inter-laboratory comparison. It is a system which is designed to objectively assess the quality of results by a third party or an external agency. External agency who has a capability and who has designed this program on scientific principles. The metrics of internal quality control and external quality control are based on statistical science. And usually you'll see a lot of graphical representation of those statistics so that that can be easily comprehended and visually you can appreciate the quality comparison with other of your peers in that group. So overview, generally speaking, we have a quality, अगर अच्छी level पे काम कर रही है laboratory तो they should be managing it. This जो हम ISO standards बोलते हैं, these are laboratory quality management systems. So they show the compliance. Once the laboratory is compliant with the management standard, that means it's a well managed laboratory. और management में quality policy को declare किया जाता है, उसके साथ commitment show की जाती है, and then quality assurance program डिजाइन किया जाता है, और क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम का एक पार्ट है क्वालिटी कंट्रोल, एंड फर्दर क्वालिटी कंट्रोल इज डिवाइडेड इनटू इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल व्हिच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी ओवर अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स प्रीवियसली, एंड नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ अनदर इंपॉर्टेंट ingredient or element of quality control, that is external quality assurance program, ECAS. So अगर laboratory manager, laboratory technologist या एक beginner के लिए, if you want to differentiate between के ये internal quality control, external quality assurance या quality control में फर्क क्या है, तो these are the few of the parameters, general, जिसमें results are available, known होते हैं internal quality control में, external quality assurance में they are unknown. So for internal quality control, the results are immediately available, while for ECAS, you have to wait until all the peers have submitted their results and they have compiled the results and then send it to you. Frequency, you need to do internal quality regularly, daily, per batch, per shift, according to what you have planned, which we have talked
or you, and in case of ECAS, you do it periodically, which may be frequency may be determined and variable depending upon the program provider. Concentrations भी उसमें भी usually normal, abnormal, different ranges होती हैं based on कि आपने क्या plan किया हुआ है और कितने quality controls आप levels use करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं. We know कि हमने objectively इसको भी calculate किया था कि how you're going to decide कि हमने कितने quality control material use करने हैं. इसी तरह ECAS वालों के multiple concentrations होती हैं. So जो हम इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल कर रहे होते हैं वो मोस्टली इम्प्रेसिजन असेस कर रहे होते हैं, जबकि ईकास वाले बोथ एक्यूरेसी और इम्प्रेसिजन को असेस करने की कैपेबिलिटी होती है. दैट्स एडवांटेज. सो इट्स बेसिकली a comparative analysis with the rest of the labs in your country, region or whatever. तो बड़ा जो ऑब्जेक्टिव ईकास स्कीम्स का होता है, जो बड़े एडवांटेजेस इसमें से ड्रॉ किए जाते हैं आफ्टर पार्टिसिपेशन, इज इट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ इंडिविजुअल लेबोरेटरीज क्वालिटी. It helps in maintaining and improving the analytical quality of laboratory test in any given laboratory. It provides the measure of state of art or the standard of care जो उस वक्त उस testing में available है, उस particular analyte के test में. So it helps in improving inter-laboratory agreement and definitely raises the standards. It guides you on based on statistics जो वो provide करते हैं कि whether it points to equipment failure, reagent problems, staff training and all that stuff. It evaluates analytical methods as well, and it gives you a very important data कि अगर आपने किसी ने method की देखनी है efficacy और उसकी quality, तो that also is a very helpful way of knowing के analytical method की quality कैसी है. And obviously it also it compares different analytical methods for the same. It stimulates the laboratory to improve their performance. So एक अच्छा जो external quality assurance program उसकी क्या ingredients होती हैं? There should be sufficient number of participants. So they should have a good number of data so that it becomes meaningful for you. There is effective consolidation of the program. जो उसके सारे aspects हैं उसको cover करने में, consolidate करने में they are experts. International recognition through accreditation होती है, different जो ECAS providers होते हैं, that's an important ingredient. Quality material जो वो use कर रहे हैं, and what are sort of how regular they are in the reports, and turnaround times क्या हैं उनके, बहुत rapid turnaround times are definitely advantage. Independent advisory panels उन्होंने create किए हुए हैं which would help the labs without any conflict, so that they can help the laboratories to improve the quality. They have flexible program choices. So these are elements of a good ECAS program. So whenever somebody is looking for adopting or associating with the ECAS program, one can evaluate based on certain criteria, and I have listed just few of them, apart from the information that I gave you in the previous slide. कि उसकी रेगुलेटर या कस्टमर्स या पीयर्स की में उनकी स्टैंडिंग क्या है ऐसे ईकास प्रोवाइडर की, उनके सैंपल डिजाइन और फ्रीक्वेंसी क्या है, व्हाट सॉर्ट ऑफ एनालिटिकल गोल्स जो हैं वो उसकी बेसिस क्या है जो वो डिफाइन कर रहे हैं, रिपोर्ट्स उनकी कितनी इजी टू रीड हैं, साइंटिफिक वैलिडिटी और रिलायबिलिटी कितनी है उनके प्रोग्राम और जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कितनी अच्छी एजुकेशन करते हैं, हेल्प करते हैं, हेल्पफुल हैं उसमें, एंड साइंटिफिक सपोर्ट उनकी कितनी अच्छी अवेलेबल है फॉर द प्रॉब्लम्स दैट दे पॉइंट आउट इन योर लेबोरेटरी. तो सैंपल डिजाइन के हवाले से अप्रोप्रिएट मैट्रिक्स क्या है, व्हाट दे आर यूजिंग, आइदर यूजिंग फ्रोजन ह्यूमन सीरम और दे आर यूजिंग लाइफलाइज्ड ह्यूमन सीरम या स्टेबलाइज्ड लिक्विड सीरम है. तो हर एक के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. So if you know these and you know कि वो किस किस्म का मटेरियल है, तो then you are aware when you start using their material कि मैं किस किस्म की लिमिटेशन एनकाउंटर करूंगा या करूंगी, और उसको अकाउंट फॉर कैसे करना है. Their stable homogeneous material है, appropriate concentration levels वो आपको दे रहे हैं, range of concentration levels क्या है, क्या वो आपकी linearity को जज करने के काबिल होगी या आपके जो एनालाइजर और मेथड की जो रेंजेस हैं उसको कवर कर रही हैं कि नहीं कर रही. एंड दे आर नॉट जस्ट अराउंड द रेफरेंस इंटरवल.
सो एज अ सेड के वो क्या रेंजेस कवर कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी अप्रोप्रिएट है कि नहीं, ताकि वो आपको मीनिंगफुल क्वालिटी एश्योरेंस दे और आपको उसमें हेल्पफुल हो कि आप, ऐसा तो नहीं है कि आप राउंड द ईयर में से एक पार्ट ईयर का अच्छा करते हैं और बाकी नहीं करते। जो एनालिटिकल गोल्स हैं वो मेथड जो क्लासिफाई कर रहे हैं उसका सिस्टम क्या है उनका, आपके मेथड को वो पूरी तरह कवर करते हैं, इंक्लूडिंग दे प्रोवाइड कि जी एनालिटिकल प्रिंसिपल को देख रहे हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स वो कवर कर रहे हैं, रिएजेंट्स जो हैं वो उनके स्टेटेड हैं, कैलिब्रेटर और स्टैंडर्डाइजेशन जो उसमें इस्तेमाल हो रही है उसका भी वो इंफॉर्मेशन उनके पास है, मौजूद है। सो यू हैव टू बेंचमार्क और यू हैव टू कंपेयर के जी वो जो कुछ उनकी कैपेबिलिटीज हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट के साथ मैच कर रही हैं, सो दैट फाइनली उनका प्रोग्राम जो है वो फिट फॉर पर्पस हो, जिस काम के लिए आप उनके पास जा रहे हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जो टारगेट वैल्यूज हैं वो एजेंसी कैसे डिफाइन करती है, और कंसेंसस वैल्यू जो बहुत कॉमनली एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो क्या चीज है, और एक्सेप्टेबल रेंजेस उसको वो क्या डिफाइन कर रहे हैं। जो ई कास्ट प्रोवाइडिंग प्रोग्राम प्रोवाइडर्स होते हैं वो उनके पास ऑप्शंस होती हैं कि वो जो अपना मटेरियल तैयार कर रहे हैं उसका जो वैल्यूज उसको असाइन कर रहे हैं उसकी बेसिस क्या है। Either they're using a reference method like IFCC enzymes या हीमोग्लोबिन AC में एग्जांपल A1C का एग्जांपल है, या वो रेफरेंस लेबोरेटरी को भेज के करवा रहे हैं, या वो they're capable of using a higher order method like mass spectrometry to assign values to that, या वो secondary reference calibrator यूज कर रहे हैं। So it's always helpful to know कि वो जो values assign कर रहे हैं अपने मटेरियल को उसका तरीका क्या है। जो प्रोग्राम प्रोवाइडर्स अपने टारगेट सेट कर रहे हैं उस टारगेट वैल्यूज का मतलब ये है कि या तो वो जो रिस्पॉन्सेज उनका आ रहे हैं उससे कैलकुलेट कर रहे हैं आफ्टर रिमूविंग द आउटलायर्स, और स्टैंडर्ड डेविएशंस कैलकुलेट कर रहे हैं, वील शो यू हाउ डू इट, या वो जो रेफरेंस वैल्यूज मैंने जैसे बताया है कि वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं ट्रू वैल्यू जिसको हम कहते हैं बाय रेफरेंस मेथड्स जो कि ट्रेसेबल हैं फिर नेशनल रेफरेंस सिस्टम को फॉर क्लिनिकल लेबोरेटरी, और वो रिकमेंडेड है एक्रेडिटर से और रेगुलेटर से। सो जहाँ पे रेफरेंस मेथड अवेलेबल नहीं होता वहां पे कंपैरेटिव मेथड यूज कर लिया जाता है, और यूजुअली जहाँ पे मेथड ग्रुप किसी एक मेथड में लेस देन 20 पार्टिसिपेंट्स होते हैं तो वो कंसेंसस वैल्यू बना ली जाती है, विच इज द सेम थिंग एज अ सेट वेयर मीन ऑफ ऑल रिस्पॉन्सेज को हम कैलकुलेट वो कर लेते हैं और उसके ऊपर उसको कंसेंसस वैल्यू बोलते हैं और उसके साथ वो कंपेयर करते हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि वो अपनी वैल्यूज कैसे असाइन कर रहे हैं और वो जो वैल्यूज असाइन करने का तरीकाकार क्या है, और जहाँ पे मेथड जो है वो उनका रेफरेंस मेथड अवेलेबल नहीं है, हायर ऑर्डर मेथड या रेफरेंस मटेरियल यूज नहीं किया हुआ, तो उसमें वो क्या कंसेंसस वैल्यू ड्राइव कर रहे हैं कितने ग्रुप में से। सो जो एनालिटिकल गोल्स हैं, अब आफ्टर ऑल जहाँ पे हमने इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम देखा था इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल प्लान करते हुए, तो हमने एनालिटिकल गोल्स डिफाइन किए हुए थे, एंड वी डिफाइंड दोज एनालिटिकल गोल्स इन टर्म्स ऑफ अलाइबल एरर्स, एनालिटिकल अलाइबल एरर्स जो कि हमने कहा था वो अवेलेबल है फ्रीली, और उसकी बेसिस भी हमने डिस्कस की थी। तो इनके भी जो एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम है ऑब्वियसली उनके भी एनालिटिकल गोल्स तो होते हैं, तभी हम उसके साथ देख सकते हैं कि जी हम कहाँ पे फॉल कर रहे हैं उन गोल्स के हिसाब से। तो वो जो है दे कैन बी बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन बिटवीन द लैब, और दे कैन बी बेस्ड ऑन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जांपल अमेरिका में जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स से लेड डाउन बाय क्लाया है वो अलाइबल टोटल एनालिटिकल एरर के ऊपर बेस करते हैं, और वो हर एनालाइट की उन्होंने दी हुई है, और उसमें जो है वो दो चीजें काउंट करते हैं, बोथ इनएक्यूरेसी एंड इम्प्रिसिजन। ठीक है जी, इम्प्रिसिजन इज बायस, तो उसके ऊपर यूजुअली उसको डिफाइन करते हैं एज कंपेयर टू यूरोपियन। यूरोपियंस क्या करते हैं कि दे टेक बायोलॉजिकल वेरिएशन जो है उसके अगेंस्ट जो है वो अपनी लेबोरेटरीज जो है वो खुद अपना एनालिटिकल एरर्स जो है वो उसको केटर करते हुए उसके अंदर रहने की कोशिश करते हैं बायोलॉजिकल वेरिएशन को, और वो इस तरह इनएक्यूरेसी और बायस की लिमिट्स को उन्होंने डिफाइन नहीं किया हुआ, बट दे हैव डिफाइंड द बायोलॉजिकल वेरिएशंस बोथ इंट्रा इंडिविजुअल एंड इंटर इंडिविजुअल, और लेबोरेटरीज खुद डिफाइन करती है कि हमारा एनालिटिकल गोल्स जो हैं वो इस वेरिएशन से करीब तरीन होना चाहिए।
And then obviously clinical need and expert opinion and some other criteria may also be used, but most familiar statistical way of doing and the easiest and most understandable would be कि आप अपना analytical goals जो हैं वो in terms of allowable total analytical error के अंदर के हिसाब से करें. So जैसे मैंने कहा कि it's important for lab to understand कि ECAS जो program provider है वो acceptable ranges कैसे set कर रहा है और वो ताकि हम उसको interpret कर सकें. फिर एक टिपिकल एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस की साइकिल कैसे स्टार्ट होती है कि सैंपल्स आपने उस प्रोग्राम में जब बना लिया, यू हैव स्टार्टेड, you have registered with that program and that provider, so you will receive their samples and your lab is going to analyze those samples and results shall be sent either online or whatever the method they have described, and then you will receive a report on that result that you have submitted. और उसको फिर वो आप you are going to review and then you are going to review, you are going to try to understand कि इस report का मतलब क्या है, और उस report के अंदर अगर if you think you need to take some action, then corrective actions have to be taken. और उस corrective actions को लेने के बाद again the next cycle में आप उसको assess कर लेंगे कि whether corrective actions have worked or not. So overall synopsis of ideas है कि the coordinator of ECAS program जो है this prepares and send the participant samples from the same pool, and the samples are assessed by laboratory using the equipment and reagents and they'll deal it just as a routine patient samples जिसना determine करते हैं, and the ECAS coordinator is going to gather all the results. It groups them and they call them peer group according to their analytical method or analyzer or any other criteria they lay down. तो उनको वो peer groups में divide कर लेते हैं, and then they calculate the target value, that is the consensus mean, and they also calculate the standard deviation of the results of the same peers and also overall as well. So if any of the laboratories has values outside of the control limits, target value plus minus allowable variation, then the laboratory is considered out of control. And out of control laboratories have to correct their analytical procedure and then they'll be again evaluated. The calculation of the consensus mean जो है ये exactly same है, जो provider है वो उसी तरह calculate करता है जिस तरह हमने internal quality control के control limits जो हैं उनको हमने calculate किया था. वही statistics जो हैं इसके ऊपर mean, STs और CVs जो है वो calculate करता है. तो mean value जो है जिसको mu कहते हैं, standard deviation उसकी each peer group की वो calculate करते हैं, and then they look at what is the 3 standard deviation around this mean, and then they would remove any of the outliers और उसको वो जो 3 standard deviation या ऊपर से है उस report को remove कर देते हैं, and they again calculate and look at what is the 2 standard deviation, और वो standard deviation को वो फिर repository result जो है उसके जो previous results से उसको compare भी करते हैं. If the results are over and the previous ranges, then results are rejected. So इस result को repeat करते हैं unless there will be no value outside the new range of plus minus 2s. So what they do is कि वो उसको जो ज़्यादा करीब analytical target value या जिस तरह भी assign की उन्होंने value उसकी mean value जो already उन्होंने पहले अगर assign की हुई है उसके करीब जो fall कर रहे हैं तो वो outliers को remove करके जो बाकी रह जाते हैं उनका consensus mean निकालते हैं और उसके साथ फिर वो compare करते हैं. So that becomes nearer to the true value, you can say. That is the reason. जो statistics apply करते हैं उसमें से one of the important statistics that applies is standard deviation index. और उसको calculate क्या करते हैं? It's a laboratory result, individual laboratory result minus the mean value of that peer group, and over the divided by the standard deviation of the peer group. And it is represented graphically like this. So this is, if this is the mean value, तो जो laboratory है वो you can visually see on this chart कि वो कितनी दूर उसकी value fall करती है. This is just similar to a z-score. Z-score जो हम standard deviation और mean के around करते हैं कि how far away is the result from the mean. And you can see
that they have labeled them as a satisfactory, acceptable and out of limit results. और वो इसी तरह के chart आप receive भी करते हैं, and they give you a visual impression where your laboratory result is falling. और इसके ऊपर जो स्टैंडर्ड डेविएशन इंडेक्स है, इसके ऊपर वो जिस तरह हमने वेस्ट कार्ड रूल्स अप्लाई किए थे, तो इसके ऊपर भी रूल्स अप्लाई करते हैं बिफोर दे कैन डिक्लेयर कि ये जो है वो लेबोरेटरी जो है वो परफॉर्मेंस उसकी ठीक नहीं है. सो 2 from 5 successive control limits, if they exceed 1 standard deviation index, it's a warning rule. और अगर मीन वैल्यू ऑफ 5 सैंपल जो उन्होंने आपको भेजे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इंडेक्स, उसमें से जो वैल्यू निकाली, इफ इट एक्सीड्स द लिमिट ऑफ +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन इंडेक्स, इट पॉइंट्स टुवर्ड्स अ सिस्टमैटिक एरर. सिमिलरली अगर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन इंडेक्स से ऊपर है, तो then it is also unacceptable performance. And then another rule is R4SDI, that is range जो है lower and higher standard deviation index की, वो मिला के जो है वो 4S standard deviation index को cross कर रही है. So these are few of the rules जिसमें standard deviation index को आप पढ़ते हैं और देखते हैं, और वो भी आपको गाइड करते हैं कि आप इनमें से किस रूल को जो है आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है, उसकी बेसिस के ऊपर आपकी जो क्वालिटी है वो कहाँ पे फॉल कर रही है और एक्सेप्टेबल है कि नहीं. देन these are 2 important calculation statistical which is applied to calculate the imprecision. इसमें precision index है which is stated as standard deviation of the laboratory, your laboratory, and standard deviation of the peer group. And the precision index जो है वो acceptable जो होता है वो less than 2 होता है. इसको graphically जिस तरह standard deviation index plot किया जाता है वैसे ही किया जाता है. And coefficient of variation ratio जो है, that is coefficient of variation of laboratory for month and coefficient of variation of the peer group. तो ये जो standard deviation index और coefficient of variation ratio है, these chart have the ability to evaluate both the imprecision as well as the inaccuracy. So this gives you a total analyte performance both on these parameters. जबकि हमने कहा था कि internal quality में हम mainly जो है precision को देख रहे होते हैं, यहाँ पे वो दोनों चीजें हमें visible होती हैं, bias और inaccuracy और imprecision. और ग्राफिकली या चार्ट में उसको अगर आपने डिस्प्ले करना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन इंडेक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रेशियो जो है उसको इस तरह की चार्ट के ऊपर प्लॉट कर दिया जाता है. एंड यू कैन सी कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन इंडेक्स जो है इस लेबोरेटरी का इज 1.5 समवेयर हियर, बिकॉज दिस इज शोइंग द स्टैंडर्ड डेविएशन इंडेक्स. और जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रेशियो है उसकी वो जो है वो यहाँ पे वो 1.6 है. So this जो 3 regions उन्होंने define किए हुए हैं उसमें acceptable and gray and unacceptable में you can see these both which gives a view of both imprecision and inaccuracy, which show that this laboratory is falling, this analyte is falling in unacceptable range. जबकि इसमें जो standard deviation index है वो -0.4 पे है और coefficient of variation ratio जो है वो 0.9 के ऊपर है. So this is a very acceptable and it's a good acceptable results of these 2 parameters, good accuracy as well as precision. External quality control program provider जो है वो normal distribution charts भी देता है based on हर laboratory की group की means, peer को groups को वो इस तरह plot कर लेते हैं. एक peer group का जो mean है वो एक बार की शक्ल में आ जाता है. इसी तरह बाकी पीयर जो हैं वो उनका जो है वो समटाइम्स वो डिफरेंट कलर्स में भी बताते हैं, बट दिस शोज के इतनी नंबर ऑफ लेबोरेटरीज जो हैं वो उनका ये मीन है और इतनी लेबोरेटरीज का ये है और वो स्टैंडर्ड डेविएशन में कहाँ पे फॉल कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली एनीवन आउटसाइड दिस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन इज आउट ऑफ द लिमिट. सो दे गिव यू दिस ओवरव्यू of a laboratory's result for a given analyte as a normal distribution chart. They also would show you इसमें ये colored chart में उन्होंने क्या किया कि this is all methods, ये जो white है this is all methods and this is your method group green में, जो आप अपना
इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं या मेथड यूज कर रहे हैं, उसका उन्होंने मीन बता दिया है और रेंज भी बता दी है यहाँ पे। और जो आपका इंस्ट्रूमेंट ग्रुप है उसको भी उन्होंने डिफरेंट कलर दे दिया, एंड दिस इज व्हाट योर वैल्यू इज। सो यू कैन विजुअली अप्रिशिएट कि इस हिस्टोग्राम के ऊपर आप अपने पीयर ग्रुप में कहाँ पे खड़े हैं एज फार एज योर quality is concerned. So this is a graphical representation of method and analyte wise, method and instrument wise. So this is another graph which they would give, which is called Youden plot. और उसमें आपको दोनों चीजें जो है वो because ECAS program वाले जो हैं they usually give you controls send करते हैं जो कि different levels के होते हैं, ठीक है, और यूजुअली अराउंड डिसीजन, क्लिनिकल डिसीजन लिमिट के अराउंड होते हैं। तो दोनों जो लिमिट्स, जो कंट्रोल्स आपने उनके रिजल्ट्स निकाले हैं, तो उनको एक ही ग्राफ के ऊपर अगर प्लॉट किया जाए तो दैट इज याउडन प्लॉट। तो उसमें ये 4SD वैल्यू तक उसको प्लॉट करते हैं, और यू कैन सी के जो ये एक्सेप्टेबल हैं, ये ग्रे एरिया हैं, और ये अनएक्सेप्टेबल हैं। तो ये आपको दोनों लेवल्स जो उन्होंने कंट्रोल्स के भेजे हैं उसका विजुअल डिस्प्ले दे रहा है कि हाउ फार यू आर फ्रॉम द कंसेंसस मीन और टारगेट वैल्यू। एंड यूजुअली द 45 डिग्रीज के एंगल के ऊपर यूं जो चल रहे हैं रिजल्ट्स, दे शो लास्टिंग प्रोपोर्शनल एनालिटिकल एरर को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये जितने भी प्लॉट्स वो आपको दे रहे हैं उससे आपको टाइप ऑफ एरर का भी पता चलेगा, प्रोवाइडेड यू नो एंड अंडरस्टैंड कि वो इससे वो क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। एंड ऑब्वियसली उसके ऊपर दैट्स अ गुड वे टू स्टार्ट ऑन के हम किस किस किस्म का एरर आ रहा है हमारे सेटअप में, और उस एरर को हमने पिक कैसे करना है और एड्रेस क्या करना है। सो इट गिव्स यू अ जनरल डायरेक्शन, रादर क्वाइट अ गुड डायरेक्शन कि आपने ये प्रॉब्लम हो रहा है आपके साथ। देन यूनिट चार्ट जो है, दिस इज this pertains to assessment of the linearity of analyte in your lab. तो वो usually 3 levels जो हैं अगर वो आपको भेज रहे हैं और आप टेस्ट करते हैं और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन इंडेक्स जो आपने कैलकुलेट किया है तीनों का वो इस तरह स्ट्रेट लाइन में फॉल कर रहा है, तो दैट मीन्स के आपकी क्वालिटी जो है ओवर दिस रेंज इज गुड, यानी वो लिनियरिटी बहुत अच्छी है उसकी। इफ द वेरिएशन इस किस्म का चार्ट आएगा तो दैट मीन्स के जो अक्रॉस द मेजरिंग रेंज है वो आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है, लिनियरिटी अच्छी नहीं है, यानी एनालाइट हायर कंसंट्रेशन के ऊपर या लोअर कंसंट्रेशन या हायर कंसंट्रेशन के ऊपर आपका मेथड जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, सो लिनियरिटी अच्छी नहीं है। दैट्स अगेन अ वेरी गुड वे ऑफ नोइंग कि आपका क्या है। बट जैसे मैंने पहले कहा कि यू हैव ऑलरेडी असेस्ड कि इस ईकास प्रोग्राम में जो आप जा रहे हैं तो इसकी जो लिनियरिटी को रेंजेस जो आपकी हैं उसको कवर कर रहा है उनका प्रोग्राम के नहीं। So now this is जो रेगुलेटर का क्राइटेरिया है वो भी डिफाइंड होता है। इफ दे वांट यू टू गिव देम द डाटा तो वो आपको बताएंगे कि प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग ऑफ एटलीस्ट ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो उन्होंने ले डाउन किए हुए हैं ईकास प्रोग्राम के लिए अगर पार्टिसिपेट आप अगर कर रहे हैं कि 2 स्पेसिमेंस 4 टाइम्स पर ईयर हो, और otherwise study of 5 samples 3 times per year to improve the capability of detecting unacceptable, ये भी ठीक है। और फिर उसके बाद क्लाया ने ग्रुप लेबोरेटरी टेस्ट को स्पेशलिटी एंड सब स्पेशलिटी कैटेगरीज में भी डिफाइन कर देते हैं, एंड दैट देन अगेन रिप्रेजेंट्स टेस्ट टू बी monitored in each category, specialty test or subspecialty test depending upon आप लैब में परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। So they might give you saying कि वो कि successful in a given category for your EQA program, तो उसमें आपने जो उनको शो करना है वो ये करना है कि your lab has produced correct result on 4 out of 5 specimen for each analyte in that category, and overall score of at least 80% for 3 consecutive challenges. So that's a standard laid down for the laboratories when they participate in external quality assurance scheme or proficiency testing. If there are more than 2 incorrect results for any analyte, the lab would be considered on probation. If the laboratory has 2 or more incorrect results for any analyte or has an overall score less than 80 on 2 of the 3 consecutive surveys, it is classified as suspended and must cease testing all analytes in the specialty category until status is
is reinstated. So you can imagine the importance of external quality assurance program कि regulator जो है उसकी basis के ऊपर कितना important decision ले रहा होता है जब आप अपना results उनको show कर रहे होते हैं अपनी scheme के कि where your quality is lying. Target values जो हैं वो जैसे मैंने कहा कि इसकी जो इक्वे प्रोग्राम है उसकी भी टारगेट वैल्यूज उनका रेगुलेशन से स्टैंडर्ड्स उनके लिए भी डिफाइंड होते हैं और फॉर सो दैट दे कैन इवैल्यूएट परफॉर्मेंस ऑफ ईच लैब. जहाँ पे मैंने हेमेटोलॉजी का स्टेट किया है कि आपका जो है वो जो भी आपका कंसेंसस टारगेट वैल्यू है उसके अराउंड जो है वो ये वाली रेंजेस हैं. सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ it's a total, it's not a sort of, but it is a total liable error limit. So that was about external quality assurance overview in general terms, as well as few statistics and charts, statistical chart they use the program provider. तो उसके अलावा भी there are many detailed हैं बहुत जो कि मेरे ख्याल में those who are in pathology and particularly वो इसमें अगर interested हो तो they can read the literature जिसमें जो program providers हैं चाहे वो आप रैंडो का देख लें या आप बायोरैड का देख लें या जो भी providers हैं उनका लिटरेचर काफी रिच होता है इस नॉलेज में कि वो कौन सी स्टैटिस्टिक्स किस तरह बना रहे होते हैं, कौन से चार्ट्स आपको अवेलेबल कर रहे होते हैं, उनका मीनिंग क्या है, आप उससे लेसन्स क्या लर्न कर सकते हैं और उसके ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं करेक्टिव एक्शंस, और उसके बाद अगर उनकी हेल्प अवेलेबल है तो उसकी भी यू कैन टेक दैट. नेशनली वी हैव वन प्रोग्राम रनिंग फ्रॉम AFIP नीकास जो है नीकाप जो है लास्ट जब मैंने उनसे डाटा लिया था तो आई थिंक 70+ लैब्स उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी. सो दिस अ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम. आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट ना होने से तो एक प्रोग्राम है, बेहतर है और उसको जो है यूजफुल बनाया जा सकता है और उसमें कम से कम कंट्री वाइड जो है वी कैन हैव सम आइडिया कि क्या हो रहा है. ओके, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल जो है वो अब किस चीज को डील कर रहा है, ये उस जगहों पे डील कर रहा है. इसका कॉन्सेप्ट ये है कि when you are having production of certain things जो particularly relevant है, for example blood bank, you have a raw material which is a biological source and then you do a set of activities on that and this ultimately leads to the end product. तो जो different processes interrelated हैं उसका एक आउटकम है और वो प्रोडक्ट की क्वालिटी एफिकेसी की शक्ल में है. Now you can see that जब प्रोडक्ट्स ब्लड के जा रहे हैं बेसिकली बायोलॉजिकल सोर्स भी है एंड सेकेंडली इट इज नॉट पॉसिबल कि आप हर ब्लड प्रोडक्ट को जो है वो टेस्ट कर सकें in order to find out कि ये क्वालिटी और एफिकेसी क्या है इसकी. सो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे चीजों में ऐसी जगहों पे यू नीड टू कंट्रोल योर प्रोसेस. सो योर प्रोसेस जो है वो जब बहुत अच्छा कंट्रोल होगा तो देन यू कैन हैव अश्योरेंस कि आपके नंबर ऑफ डिफेक्ट्स जो हैं उस प्रोडक्ट के एंड प्रोडक्ट के वो बहुत एक डिफाइंड लिमिट के अंदर होंगे. सो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे. क्योंकि ब्लड जो है वो बायोलॉजिकल मटेरियल है तो उसमें आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में तो डेफिनेटली अगर कोई एक नट बोल्ट बना रहा है और वो जो है उसने एक ही स्पेसिफिकेशन का बनाना है तो उसके ऊपर तो ज्यादा बिकॉज उसका रॉ मटेरियल हर चीज जो है वो डिफाइंड है, वो बायोलॉजिकल नहीं है, उसमें वेरिएशन नहीं है, इनहेरेंट वेरिएशन बहुत कम होती है. तो ये जो है ये प्रोसेस कंट्रोल किया जाता है इन ऑर्डर टू हैव अ कॉन्फिडेंस कि आपका जो एंड प्रोडक्ट है वो ठीक है बिकॉज योर प्रोसेसेस आर ऑल ओके एंड गुड and they do not have they are following certain rules and they are following certain limits. तो ये जितने प्रोसेस होते हैं इसमें से हर प्रोसेस में से डाटा जनरेट हो रहा होता है डिफरेंट. सो एज आई इंडिकेटेड, so each process which is involved in let's say making a blood product would generate certain data. और अब ये जो इसके ऊपर एप्लीकेबल रेगुलेशन एंड डायरेक्टिव्स हैं वो बड़ी क्लियरली स्टेट करते हैं कि स्टैटिस्टिकल मेथड शुड बी एम्प्लॉयड फॉर मॉनिटरिंग ब्लड प्रोडक्ट क्वालिटी इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल.
तो अब जब उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि आपने स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल करना है, तो वन नीड्स टू नो कि ये क्या चीज है. सो इट्स अ मेथड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ अ प्रोडक्ट और अ प्रोसेस दैट रिलाइज ऑन अ सिस्टम ऑफ एनालिसिस ऑफ अ एडिक्वेट सैंपल साइज without the need to measure the each and every product of every process. तो वो जो सैम्पलिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी भी पता होनी चाहिए, एंड दैट इज आल्सो कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के जरिए आप उसकी फ्रीक्वेंसी और सैंपल साइज को भी कैलकुलेट करते हैं. So I'm not going to go into a lot many details of that, but ये statistical process control बहुत अहम concept है जिसकी applicability जो है वो किसी भी चाहे वो clinical laboratory है या blood bank है या even for any other service and industry, they would need to know कि जी ये हम process control कैसे करते हैं. जो statistics इसमें process control के लिए की जाती हैं वो control charts भी use किए जाते हैं. Scan statistics भी होती है. फिर scan statistics जो है वो for dichotomy आउटकम्स के लिए भी होते हैं स्टैटिस्टिकल कंट्रोल जो है. सो देयर आर मेनी वेज, लेकिन जो सिंपलेस्ट है वो कंट्रोल चार्ट्स है. अच्छा, फिर जो हर प्रोसेस है उसकी ना सिर्फ आप ये देखते हैं, यू आल्सो वांट टू नो कि ये प्रोसेस जो है वो कैपेबल भी है कि नहीं कि वो आउटकम वो अचीव कर सके. सो दैट इज आल्सो कॉल्ड प्रोसेस कैपेबिलिटी कैलकुलेशंस. तो जो सीपी जो होता है प्रोसेस का करने का, दैट जो एक स्टैटिस्टिक्स है, दैट इंडिकेट्स हाउ वेल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजरमेंट, बिकॉज आई सेड कि हर प्रोसेस में से डाटा जनरेट हो रहा है, उस डाटा को आप ले रहे हैं एक गिवन सैंपल साइज में से उठा रहे हैं वो डाटा, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी आपने डिटरमिन की हुई है, और उसके ऊपर आप देखते हैं कि ये जो है जो मेजरमेंट उसकी आप कर रहे हैं वो स्पेसिफिकेशन लिमिट्स जो डिफाइंड है उसके अंदर फॉल कर रही है कि नहीं. और जैसे मैंने ब्लड का एग्जांपल दिया तो योर स्पेसिफिकेशंस आर लेड डाउन कि अगर प्लेटलेट है तो उसकी अपर लिमिट क्या रिक्वायर्ड है. तो वो जो है दैट इज आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है कि जो भी स्पेसिफिकेशंस डिफाइंड है उसका अंदर आप फॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. सिमिलरली ये जो सीपीके कैलकुलेशन है दैट इंडिकेट्स हाउ वेल द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेंटर्ड अराउंड द नॉमिनल या टारगेट वैल्यू. ये दिस इज जस्ट लाइक प्रिसीजन को जैसे आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये उसी तरह की डेमोन्स्ट्रेशन है. सो जो प्रोसेस है वो इट मे बी बाउंड बाय बोथ स्पेसिफिकेशन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, और दे मे बी जस्ट बाउंड बाय लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट और अपर. मैंने अभी एग्जांपल दिया अपर स्पेसिफिकेशन लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट के इतने प्लेटलेट काउंट से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है. और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट का एग्जांपल ये है कि अगर आप ल्यूकोडिप्लीशन कर रहे हैं तो इस काउंट से जो है वो कम होना चाहिए. सिमिलरली हीमोग्लोबिन और बाकी पैरामीटर्स के लिए भी डिफाइंड है. सो जितनी आपकी सीपी और सीपी के वैल्यूज जो हैं वो लार्ज हैं, इट्स अ बेटर आपका प्रोसेस बड़ा अच्छा है, एंड इट इज केपेबल ऑफ मीटिंग द स्पेसिफिकेशंस व्हिच आर ऑलरेडी लेड डाउन सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स. ओके, अब ये ग्राफिकल आपको मैंने विजुअली दिखाया है कि इफ यू हैव दिस मीन एंड यू हैव दिस अपर एंड लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट्स, तो आपका जो डाटा जनरेट कर रहे हैं उसकी बेसिस के ऊपर कैलकुलेशन करके यू कैन जज के आपका ये प्रोसेस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है. और अगर आउट ऑफ कंट्रोल है तो प्रोबेबली जो आपने ऑलरेडी सेट की हुई थी, जैसे हमने क्वालिटी कंट्रोल में सेट किया था कि आपकी लेबोरेटरी के अंदर क्या इम्प्रेसिजन है, तो ये उसी तरह है. और आपकी मीन क्या है, तो अगर आपने एक दफा प्रोसेस सेट जब करना किया टू आउटसेट पे स्टार्ट में, तो फिर आपको पता चल गया था कि जी आपका मीन कहाँ पे है और उसके अराउंड आपकी वेरिएशन कितनी है, और उसके बाद आप कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करते हैं. तो जहां पे भी आपका प्रोसेस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो यू कैन सी कि वो मीन जो है उसका शिफ्ट हो गया. खलील साहब आउट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस. माइक म्यूट कर दें खलील साहब, शोर आ रहा है. डॉक्टर खलील रहमान प्लीज म्यूट तो योर. यहाँ पे जो है ये प्रोसेस जो है इन कंट्रोल है. जब आपने स्पेशल कॉज कोई जो आई थी या कोई रैंडम एरर जो आया था उसको रिमूव कर दिया तो प्रोसेस बिकम्स इन कंट्रोल. तो दिस इज हाउ यू हैव ग्राफिकली देखते हैं. अब यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे बता रहे हैं कि इन कंट्रोल तो है, ये प्रोसेस इन कंट्रोल है, ठीक है, लेकिन इसमें जो कैपेबिलिटी है प्रोसेस की वो अफेक्ट होगी. वो कैसे? बिकॉज the range has gone outside कि आपकी जो upper और lower limit specifications defined थी उससे बाहर निकल
So this process is in control but is not capable. So यहाँ पे जो है, this is ideal. The process is both in control as well as capable. So ये concept है कि आप statistical process control जो है वो उसको कर रहे हैं और आप दोनों चीजें देख रहे हैं कि वो स्पेसिफिकेशन के अंदर है, आपका प्रोसेस जो है वो मीट कर रहा है, प्रोडक्ट वो बन रहा है जो स्पेसिफिकेशन के अंदर है, और सिमिलरली वो जो है वो आपका जो प्रोसेस है इटसेल्फ इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट जो कि स्पेसिफिकेशन को मीट कर सकता है. तो ये पर्टिकुलरली इज एप्लीकेबल. तो ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इसका है. इसकी आप स्टेटिस्टिक्स की डिटेल में जाना चाहें तो वो जैसे मैंने भी आउटलाइन की वो बहुत सारी हैं, लेकिन ये कंट्रोल चार्ट इज जस्ट सिमिलर टू व्हाट वी डू इन लेबोरेटरी, जिसमें हम इम्प्रेसिजन कैलकुलेट कर रहे होते हैं और उसमें हमें अलबत्ता सैंपल साइज और उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग जो है वो डिफाइन करके उसकी बेसिस के ऊपर हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं. So in conclusion, external quality assurance schemes are useful as third-party evaluation of laboratories' total analytical performance. It provides a very useful objective information that can be used by laboratories for improving performance and plan quality assurance with confidence. It is one of the most important tools for regulators to specify quality goals, regulate laboratories, and protect consumers. हमें cost effective national external quality assurance scheme of high quality is absolutely mandatory for a country and long due. Some product oriented healthcare facilities like blood bank need to implement statistical process control science to improve the quality and efficacy of the product. So with this, I conclude this talk and thank you very much for your patient listening. Thank you very much, Brigadier Nuzhat. Now, Brigadier Amir Ijaz, I will request you to give your comments. And really, it was a nice session of our 6 lectures. And hope, Brigadier Nuzhat, you will be available on the different topics of transference. Dr. Amir Ijaz. Thank you very much, Professor Mulazim. Once again, an excellent activity has been arranged by PMA. Thank Dr. Qazi and Dr. Salma, Professor Qazi and Professor Salma. And I have no words to thank Dr. My old colleague, old not in the age, but Dr. the time Nuzhat. we have Yes. been working together, Brigadier Nuzhat. Really, I'm saying it from the core of my heart that it was an excellent talk and I have learned a lot. First, a few words about the PT program. Number one point is, I'm just recapping it for my younger colleagues, that external quality assurance schemes, this is part of the quality control. And its second name is proficiency testing, PT program. So first point is for the sake of simplicity, PT and external quality assurance is one and the same thing. Number 2 point, if your lab wants to go for accreditation of any sort, so either it is from the PNAC, Pakistan National Accreditation Council, ISO 15189, or you are going for CAP, or you are going for some other accreditation program, the foremost important thing is this PT program. If you are not doing PT, you are not doing external quality assurance, you cannot get any sort of accreditation. Now, point number 3, how to go about it? How can we get it? From where we can get it? This depends on your budget. If you are having your lab is there is no fund problem, or you can manage some problems, then you can go for commercial programs which are available in Pakistan. I'm not any rep of any firm, but let me take 2 names, Rendox and Biorad. Rendox and Biorad, they offer excellent external quality assurance schemes. Both are available in Pakistan, and roughly their cost is roughly 100,000 for routine chemical pathology, routine clinical chemistry, which is called, and 100,000 for hematology, and 100,000 for hormone assays, amino assays, which include hormones, tumor markers, etc. So if you can afford 300,000
per year, you can easily get those programs. They will train your staff and everything is online. You can upload it. They send you 12 samples for 1 year. So for each month, you have to do the test for that particular month. They are in small vials, and you have to reconstitute it and carry out the test and upload your results in their website, on the portal, and then you get the results. The stats is almost the same, which Professor Nuzhat has explained. And but if you cannot afford the one thing, you must try it. You have to fight with your administration, with your state sab, to buy this program. Uh, but if there's really shortage of funds and you cannot afford it, then the as Professor Nuzhat told us, NICAP is an excellent program, National External Quality Assurance Program, Pakistan, offered by AFIP for the last 25 years. I know I'm witness to it, how it started. This is about 20,000 for each program. And now, why to go for it? One is accreditation, as I told you. It's an essential requirement for accreditation. Second, now I'm talking to all my lab people and all the clinicians who are listening to us. This external quality assurance program, or PT program, saves your skin from any suits, judicial actions, legal actions, because you can show the results that our lab is doing fine. If you will show the internal quality, that probably will not solve the purpose, but external quality is a very good thing to save your skin from any illegal actions. So this is a very important point, and you can go for it. You can fight for it. And थैंक यू ब्रिगेडियर आमिर. एक thank you. सवाल था, पहले तो मैं ये Please. बताऊं कि ब्रिगेडियर नुज़हत, आपने वो दरिया को ना कूजे में बंद कर दिया है, और ये क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, देयर वाज अ बिग एम्बिग्युइटी इवन डिफरेंट स्टूडेंट्स के क्या होता है. अच्छा, सवाल ये था कि मैंने और डॉक्टर ब्रिगेडियर आमिर ने जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन ये आप बताएं, कैन वी यूज द पेशेंट सैंपल फॉर दिस क्वालिटी कंट्रोल? जी ये एक है, इसमें लोग कहते हैं कि जी ऑल्टरनेटिव है, लेकिन आई डोंट थिंक सो इट सब्स्टिट्यूट्स दैट लेवल. दिस इज अ डेस्परेट एक्शन है या इन एडिशन एक्शन है. इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर ईक्वे एट ऑल. और उसके ऊपर पेशेंट सैंपल्स के ऊपर जो आप स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं, वो एक बड़ी सेट किस्म की डिफाइंड है, जिसमें आप डेल्टा चेक कर सकते हैं, या आप जो है वो उसकी पेशेंट्स की वो जो मीन्स है वो करके कर सकते हैं, कुछ इंडिसेस ड्राइव कर सकते हैं, बट इट डज नॉट सब्स्टिट्यूट ईक्वे. जी, I can add what I agree to with Nuzhat. The bottom line is there is nothing like this. This is the bottom line. If you will go for the such things, you will ignore the very important and very popular things. But for just for academic purposes, there is one method which is called Q-sum method. Q-sum is that Yes, you total all the that patient is for, results yes, for for the day one, and complementary method. Yes, yes, yes. and then this. But don't go for it. Go for the. यस, ब्रिगेडियर नुज़हत, हमारे दरमियान हमारी बहुत सीनियर तरीन उस्ताद बैठी हैं. प्रोफेसर नौशीन, यू आर ऑलवेज, मैडम, कैन यू कमेंट आवर this closing webinar on the lab, basic concept of the labs? Professor Noshin was. I just have extreme appreciation for all the effort that is being done, and extremely useful lectures, although this is not my specific subject. But the way Brigadier Nuzhat explains things, it is remarkable. The command that she has on the subject, and Dr. Amir Ijaz Saab, I was always very, very impressed by him. So collectively, this effort by these two genius people is really helpful for everyone. And thank you very much. Excellent sessions. Thank you very much, Madam Noshin. हम हिस्टोपैथोलॉजी में भी
नो डाउट कम यूज करते हैं एज कंपेयर टू केमिस्ट्री एंड हेमाटोलॉजी, लेकिन उसमें भी हम इसको बाज़ का क्वालिटी कंट्रोल को यूज करते हैं. Any question? If there is any question, if there is no question, I will ask Qazi Wachik Just Saab. one more point. You can imagine Yes, Madam Noshin. How useful these sessions are. You can imagine that I'm sitting in UK for the past 6 months, but I never would like to miss any of these sessions. Thank you, madam. Thank you, madam. जी आपका Qazi Saab. Sir, closing remarks. So I think Madam Salma is there. नहीं, आप सवाल करें कोई एज ए क्लिनिशियन सवाल करें कोई. ये सर एक सवाल मिनहाज पिदवाई साहब का चैट बॉक्स में है. I think we should ask the speaker or Madam Nuzhat to answer that. Apart from PNAC, what are other accreditation bodies in Pakistan? Brigadier Amir, thank you very much for replying on that. There's none in Pakistan. There's only CAP in from USA. करके I think एक और मैं बड़ा important इसमें point highlight कर दूं वैसे, वो ये है कि जब से हेल्थ केयर कमीशन बना है, if you look at their minimum service delivery standards, तो उसमें लैब भी है. अगर लैब के उस डॉक्यूमेंट को देखें तो भी है, उसके 6 पैरामीटर्स भी है जी, लैब भी है उसके अंदर. जी है. अच्छा, उसमें जो पैरामीटर्स हैं उसमें उन्होंने इलूड किया है ईक्वे को, मगर अभी इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की ये जरूरत है कि अगर वो रिक्वायर कर रहे हैं ये, जैसे अभी हमने पॉइंट आउट किया है कि कुछ अमीर लैब्स तो अफोर्ड कर लेंगी, बाकी लोग क्या करेंगे. ठीक है, तो जब वो बाकी लोग, और खास तौर पे हॉस्पिटल बेस्ड जो लैब्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज वहां पे दस्ती क्लिनिकल डिसीजंस हो रहे होते हैं, तो वहां पे इस स्टैंडर्ड को, मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स को लैब में इम्प्लीमेंट करने के लिए वी नीड टू हैव अ कैपेसिटी. और वो कैपेसिटी जो है वो जो एक बताई, और मैंने भी बताया कि FIP तो कर रही है, बहुत अच्छी बात है कि अगर उसको नेशनल लेवल के ऊपर ले जाएं और उसको सारी लैब्स को, जो जिनके पास बाहर वालों के रेंडो या बायोराइड के प्रोग्राम में जाने की नहीं ऑप्शन, तो इसमें तो जाए ना कम से कम. और उसमें व्हाट वी कैन डू स्टार्ट विद इज कि हम क्रिटिकल पैरामीटर्स को तो कर लें. ठीक है, जो स्पेशलिटी वाले हैं उसको छोड़ दें, जो आपके नॉन स्पेशलिटी वाले डेली ब्रेड एंड बटर है जिसके ऊपर क्लिनिशियन डिसीजन करने हैं, उसको तो देखें ना कि इस क्वालिटी पे काम हो रहा है. इंस्टेड ऑफ सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. मुलाजिम, आपकी इजाजत से मैं एक जरा सा हटके पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट. जी. आई एम टॉकिंग टू द पैथोलॉजिस्ट, ऑल द पैथोलॉजिस्ट. Incidentally, I'm one of the inspectors of the Punjab Health Commission for Laboratories. I'm an external evaluator. I'm not their employee. I'm an external evaluator. And these days we are doing surprise checks to the labs in Punjab who are doing PCR COVID-19. So mainly the issues are of the rates. They have not capped the rates to 3,000 for the common methods and for 4,800 for the sophisticated methods. Second very important point, and this is related to the ICAS. National Institute of Health, NIH, has started a program of ICAS for PCR COVID-19 in Pakistan, which is a great thing really. And credit goes to Major General Amir Ikram. In fact, I suggested him and I sent him a document how to implement, because PCR COVID-19 is a qualitative test. This is very important to know. It is not a quantitative test in Pakistan, and ICAS is very important. So they offer it free of cost. They do not charge anything. They send 6 samples to every lab after 2 months, and you have to send the results. So mostly, only some labs were found participating in this program, but I didn't close those labs who were not using this. I just advised them to send an email to the NIH, and then they can participate. So if you want, there are free of cost programs also available. Thank you. ये एनालाइट स्पेसिफिक है ना सर, ये बहुत अच्छा किया है कि इन्होंने इसको कोविड के लिए किया है, बिकॉज दैट वाज उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है. लेकिन देखें, आई थिंक NIH को, मैंने लास्ट भी जनरल आमिर से बात हुई थी, मैंने कहा एटलीस्ट ये जो सबसे बदनाम जमाना हेपेटाइटिस B-C का PCR है, इसको तो कुछ कर लें इसी तरह का प्रोग्राम. आप देखें, it is a tragedy
कि वो जो है इसके ऊपर आप रेट्स की वेरिएशन देखें कि वो हैरत होती है कि who can ever do a test in 1600 rupees of hepatitis B C PCR, लेकिन वो कर रहे हैं तो उसके ऊपर मैंडेटरी होना चाहिए और कस्टमर कंज्यूमर को भी एजुकेट करना चाहिए. मैं भी Yes, I'm here. I'm sorry. मैं unmute नहीं कर पा रहा था. Yes, I'm here, but I joined late. I couldn't comment on that today's presentation, but I just only thanks to the speaker for presenting today's PMA webinar. I'm really extremely thankful. Thank you very much. अच्छा, मैं भी शुक्रिया मुलाजिम साहब, मैं भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रोफेसर नुज़हत का कि इट वाज एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, इजी टू अंडरस्टैंड और बहुत सी चीजें हमें नई मालूम होती हैं इनके लेक्चर्स से. शी इज अ वेरी गुड स्पीकर and it is really lovely to listen to her presentation. And Brigadier Amir Ijaz, as always, very scholarly. His comments, his answers. No doubt, really, no doubt. So thank you very much, both of these learned speakers. And I think we can move on to Professor Salma Kundi for her final remarks. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. मुझे बहुत खुशी होती है प्रोफेसर नुज़हत सलामत साहिबा सुन के, and I'm really grateful to her because उन्होंने मेरे जहन के दरीचे बहुत खोल दिए हैं. इनके कुछ अरसा पहले एक वेबिनार हुआ था एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप का इसी जगह से पैथोलॉजी का. के बाद मैंने अपने लैब्स में एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप के ऊपर एक प्रोग्राम शुरू करा दिया है. मतलब है कि ये हम सब के हॉस्पिटल्स को स्ट्रेंथन करना, लेबोरेटरी को बेहतर बनाने का जरिया बनेगा. और ये सारे वेबिनार्स तो हम वो कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं. मैंने सारे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में अब चूंकि ओवर हो गया है, ये सीरीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, एंड देन वील गो अराउंड इट कि हम किस तरह अपने लैब्स को बेहतरी की तरफ लाएं. आई एम रियली ग्रेटफुल टू प्रोफेसर प्रोफेसर आमिर इजाज साहब, प्रोफेसर मुलाजिम हुसैन साहब के आपने पैथोलॉजी की तरफ भी हमारा कुछ जहन उस साइड पे कर दिया है. एंड थैंक यू डॉक्टर नौशीन साहिबा फॉर बीइंग हियर, and my brothers in PMA, thank you so very much. It is lovely seeing you, having you here. Jazakallah khair. Allah bless all of you.